AS 16. Okay, so property, plant and equipment are the tangible assets. Only tangible assets we're going to consider for Index 16. So tangible assets which we are using for the production and the supply of the goods and services, like machinery we use in a production, right? And then supply of goods and services, we can take an example of vehicle. So vehicle we use for the supply of goods or services. So machinery, vehicles, this will be classified under Index 16. Then rental to others. So suppose if I have given my machinery on a rent to others, then that machinery will going to be classified under Index 16, and accounting of that machinery will be done as per Index 16. So it is like this. For administrative purpose, so if I'm using any asset for an administrative purpose, okay, so that asset will also be accounted as per Index 16, and these assets should be used for more than one accounting period. So recently, in a recent attempt, ICAI has asked the question on the basis of this condition. Usually we ignore this condition and we don't keep this in mind, and suddenly question comes. So this is also important, like each and every line is important to remember. Okay, so please note this also, that if asset is for more than one accounting period, then only we will consider that asset as an PPE as per India 16. Okay, otherwise जो भी cost हुआ रहेगा asset का which is for less than one accounting period, वो पूरा expense out होता है. ठीक है, next. Now property, classification of property. So here individually I have taken land and building. So the land and building, if we are using for the business purpose, like for the production of or supply of goods or services, or for administrative purpose or rental to other, then only that building or land will be classified under Index 16. Otherwise we will going to consider it as a investment property as per India's 40. Okay, so if we have held property for rental income, capital appreciation, or if there is any undetermined future use, so in all that cases we will going to classify building or land in Index 40. Recognition criteria of PPE. So PPE is recognized in a book only if following conditions are satisfied. First, there should be a probable future economic benefits from the asset, and the cost can be measured reliably. If any of this condition is failed, then we will going to expense it out. Now, initial recognition of PPE. So we can record both kind of PPE, the PPE which is being purchased or PPE which is self-constructed. So PPE is recognized at a cost. So now how we will going to determine the cost, that we will going to understand further. Cost includes all directly attributable cost necessary to bring the asset to the location and condition intended by the management. तो जो हमें condition location चाहिए, वो location condition लाने के लिए जितने भी cost हम लोग incur कर रहे हैं, वो सारी cost include होगी. कॉस्ट ऑफ पीपीई, व्हाट टू इंक्लूड. अभी कॉस्ट ऑफ पीपीई में क्या क्या इंक्लूड होगा. फर्स्ट इज द परचेज प्राइस, देन वी विल गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ट्रेड डिस्काउंट रिबेट, वी विल गोइंग टू ऐड इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज टैक्सेस. We will going to add only if it is a non-refundable. If taxes are refundable, so in that case we will not going to include. So here are the example of the cost that we will going to include in the cost of PPE. So property transfer, tax, stamp duty cost, legal fees, ये सारी cost include होगी. ठीक है. Here important point is that employment cost will going to be added only if it is related to the construction workers. अगर ऐसा बोला है कि staff training है, relocation of staff है, similar kind of any other things, so वो सब P&L में जाएगा, हम लोग उसको cost में add नहीं करेंगे. Here one more important point is this one: present value of estimated dismantling and decommissioning, restoration, demolition cost. So if we need to incur any cost after 5 years, or like take an example after 10 years, so that cost we record at a present value. Okay, so that cost we will going to estimate, and then we will
going to record it on a present value. So there are many questions in which there is a dismantling cost. Okay, so we have to remember that initially we will going to record it on a present value, and later we will going to charge interest on the liability. Then this all cost will not going to be included in the property, plant and equipment. That cost are staff training, relocation, opening, inauguration, advertisement, maintenance contract. This is important. There is a question on this cost. Then day to day repairs and maintenance, कोई भी type of overheads, abnormal cost, operating losses, cash discount we will go to record in a P&L. Interest on loan will going to be added only if it is a qualified asset as per India's 23. Any other incidental income, if we are earning, then that all incidental income will going to be recorded in a P&L. For example, car parking. Okay. So accounting entries for a PPE. So initially, at the time of the purchase or construction, we will going to record PPE to bank account to provision for decommissioning liability. At the each year end, we will going to unwind the discount. Okay, so we will going to add interest on the decommissioning liability. Also, we will going to charge interest in a P&L. Then to record depreciation, there are two methods. First, we can directly charge it to the asset. Next, we can charge it to the accumulated depreciation. Then later we can set off with the asset. So these are the two methods which we can use for charging depreciation. इन्होंने कॉस्ट इनकर किया है फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए और अपना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो कौन से कॉस्ट उन्होंने इनकर किया है? साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, फिर है डायरेक्ट मटेरियल, direct labor cost including 10,000 incurred during industrial strike. So see here 10,000 is been incurred for a industrial strike. This is not a directly attributable cost, so we will not going to include this cost. Okay, so this is the total cost including this strike cost also. So we will going to reduce 10,000 from this cost. Okay, then testing of various process in the factory, this is directly attributable cost. Consultancy fees for installation of equipment, yeah, we're going to add. Relocation and general overheads will not going to include it. Okay, estimated cost of to a dismantle, yes, we include this cost also. It is being given in a present value, so we will going to take directly this amount because it is already being given in present value. Okay, so now let's see the solution. So in solution we will going to do like this. Okay, and we'll get the amount which can be recognized in balance sheet, which is 4,000. On 1st April 2001, XYZ Limited acquired a machine under the following terms. List price of a machine is 80 lakhs, import duty 5 lakh, delivery fees 1 lakh, electrical installation cost 10 lakh, pre-production testing 4 lakh. Okay, so let's decide which cost can be included and which cost cannot. So we'll include this list price, import duty, delivery fees, electrical installation cost, pre-production testing. This all cost can be included. Purchase of 5-year maintenance contract with vendor, this cannot be included because this is the maintenance contract. Okay, this is not the directly attributable cost, so we cannot include this. In addition to above information, XYZ Limited was granted a trade discount of 10% on the initial lease price of the asset. Okay, so XYZ Limited also got the 10% trade discount. So we will going to reduce this 10% discount from the list price. Okay, and settlement discount of 5%. So settlement discount of 5% will going to calculate this lease price minus trade discount, will get a net price, and on that net price we will going to calculate this 5% cash discount.
if payment for the machine was received within 1 month of purchase. So if we'll make payment within 1 month, then we will going to get this discount. XYZ Limited paid for the plant on 20th April 2021. So here this date is being given to tell that payment is being made within 30 days. Compute the cost of the asset to be recognized. Okay, so what we're going to do is we're going to add this all directly attributable cost, and yeah, that's it. Because we don't include cash discount, and we do not also adjust cash discount in cost. Okay, we record it separately in P&L. So we'll just going to ignore the discount, and remaining solution we will see. Okay, so list price is 80 lakh. We have reduced trade discount of 10%. Then this is delivery fees, installation, testing. So we got the cost of a PP. Then maintenance contract we have entered for the 5 years. Okay, so we will going to divide 7 lakh by 5 years, and accordingly every year we will going to record the maintenance cost. So this is the entry which we have made for the maintenance cost. And see, we have paid this much, but among this we have prepaid for the remaining 6 months. So that will be our prepaid expense. So that will be asset for us. Okay. Cash discount of 80 lakh minus 5% minus 8 lakh into 5%, 3 lakh 60,000. This will be shown as an income in PNL. Okay. ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred this cost. Cost of the plant, cost per supplier's invoice plus taxes. ठीक है, we'll assume that taxes are non-refundable. So we will going to include this whole 25 lakhs. Initial delivery and handling cost. So we can add this cost. Cost of site preparation, yes, we will add. Cost used for advice on the acquisition of the plant, 7 lakh, we can add this. Interest charges paid to the supplier of the plant for deferred credit. Okay, so for the borrowing cost, we can include interest only if the asset is qualified asset. Okay, so here nothing is mentioned in the question that the asset is a qualified asset, so we will going to ignore this interest. Then net present value of estimated dismantling cost to be incurred after 7 years. So this is already being given at a present value, so we will directly going to take 3 lakhs. Operating losses before commercial production. So loss we do not include in cost, right? So we're going to include this losses and interest charges. Remaining every cost can be included for the initial recognition of PP. ABC Limited, the cost can be in accordance to the India 16. So let's see the solution first. So we have added cost, delivery cost, site, consultancy fees, present value, and we got the cost of 43 lakh for recording PP. Okay, so now we will going to understand the concept where the payment is being made beyond normal credit terms. मतलब हम आज पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे. सो वो केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्यूचर का जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग पीवी करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं. इनिशियली हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट हम लोग ऐड करते हैं एवरी ईयर until until that amount becomes equals to the फ्यूचर वैल्यू. तब तक हम लोग इंटरेस्ट ऐड करते जाते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम कैसे समझ रहे हैं कि जो पीपी हमने जो परचेज की है वो हम लोग अगर उसका जो पेमेंट है वो डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स पे हम लोग पे कर रहे हैं. ठीक है, तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स हम लोग फ्यूचर में पे करने वाले हैं उसको पीवी पे लाते हैं, एंड देन वी will going to add interest into that, and we will going to bring till the future value so that we can make the payment on that year.
On 1st April 2001, an item of property is offered for a sale at rupees 10 million with the payment terms being three equal installments of 33,33,000 over a 2-year period. Okay, so this amount we will going to pay over a 2-year. Payment are made on 1st April 2001, 31st March 2002 and 31st March 2003. Implicit interest rate of 5.36% per annum. Pass the journal entries for recording the property in accordance with India 16. Okay, so this installment we are paying on this dates. So what we will going to do is, let's understand with the solution. First we will going to calculate the normal price or the cash price. It's basically the present value. So the payments which we are going to make on this dates, I have taken that payments and I plotted the dates. Then we will going to take the PV factor. Okay, this we are paying on a 1st April, so the PV factor will be 1 because वो हम लोग zero time पे pay कर रहे हैं. Right now we are not paying on a future dates, so here PV factor will be 1. This now we are paying after 1 year, so I've taken p factor of after 1 year, and this is after 2 year, and here we got the present value. So this is the present value. On this value we will going to recognize PPE. Okay, so now we will also have to add interest. Okay, so here I have done the calculation of interest. So on the 1st April we will take the present value which we have calculated above, then the payment which we are making on the zero time. Okay, first installment we are making at zero time only, so I have taken the installment. Then we got the closing balance. Then as on in next year we will going to calculate interest of 1 year, and also we are making the payment, we'll get a closing balance. Then on in second year the same. So we have got the interest of 2 years, and we will going to charge it to the payable account. So see, on a 1st April we will going to make PPE to bank to trade payable, because on zero time we are making payment of installment. So that's why we have taken bank account. PPE will be recorded on the present value. ठीक है, PPV will be recorded on the present value. This is V. Okay, and the remaining balance will be stand as a payable. Then we will going to charge interest on next year. We are also paying installment in next year, then same in second year, like this. Okay, easy. In this concept we will going to understand, when we are acquiring asset in exchange of asset, then what will be the accounting for the same. See here, in exchange the transaction could be commercial and non-commercial. Now what is commercial transaction? A transaction which is impacting the cash flow of the business, that transaction will be known as a commercial transaction. Okay, if business situation changes after the exchange, then we will say that transaction is a commercial transaction. Now let's take an example of the machine. I'm having a machine which is producing 10,000 units, and now I'm exchanging that machine with another machine which is producing 20,000 units. So now I will be able to produce 20,000 units with the same time, and this is impacting my business and also the cash flow. So if business is impacting economically, if the transaction is helping business economically, then that transaction will be known as a commercial transaction. I have taken one more example. Also, if we will use new delivery van, then also it will going to help our business. Also it will thereafter help with our cash flows also. So these are the commercial transaction. So now how we will going to do accounting? Here I have written this as a priority wise. Okay, so first priority we will going to give to the fair value of the asset given up. So here see, I'm giving machine and I'm also taking another machine. So the new machine which I'm taking, I will going to record that new machine with the fair value of the machine given up. ये मशीन का जो फेयर वैल्यू है उस पे आई विल रिकॉर्ड न्यू मशीन. ठीक है, अगर वो नहीं दिया है देन फेयर वैल्यू ऑफ द असेट रिसीव, जो मुझे 20,000 का यूनिट का जो मशीन मिला है, देन उसकी फेयर वैल्यू पे आई विल रिकॉर्ड, अगर मशीन ए का अगर नहीं दिया है तो.
देन कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट गिवन अप, अगर ये दोनों भी नहीं है तो अगर ये जो मशीन है उसका जो कैरिंग अमाउंट है उस पर आई विल रिकॉर्ड. नाउ सी, हियर आई एम ऑल्सो गिविंग कैश ऑफ 1 लाख. तो जो भी फेयर वैल्यू होगा ना ये मशीन का, उसमें आई विल गोइंग टू ऐड दी कैश ऑफ 1 लाख रुपीज ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज आइडियली देखो ना, वो मशीन जो है वो मुझे 1 लाख रुपीज पे करने के बाद मिली है, तो ये भी हम लोग का एक तरीके से कॉस्ट ही है. सो वी विल गोइंग टू इंक्लूड दिस ऑल्सो इन दी कॉस्ट ऑफ द मशीन. नाउ इफ वी हैव रिसीव्ड इट, अगर मैंने दिया है और उन्होंने मुझे कैश दिया है, उसका मतलब ये है कि जिस वैल्यू पे, मतलब जिस कैरिंग वैल्यू पे मेरा जो मशीनरी है उससे कम वैल्यू का है, इसलिए मुझे कैश रिसीव हुआ है, तो वो वाले केस में हम उसको डिडक्ट कर देंगे. इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, उससे आपको समझेगा. अभी है नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे हम मेरे कैश फ्लो में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, पहले भी बिजनेस वैसा था, उसके एक्सचेंज के बाद भी बिजनेस वैसा ही है. सो हियर देयर इज नो चेंज इन द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस. सो ये ऐसे वाले ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन. एग्जाम्पल, कंपनी एक्सचेंज ओल्ड मशीन ए विथ मशीन बी. तो बस यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जहाँ पे दो कंपनी अपने वेयर हाउस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मेरा जो वेयर हाउस है वो पहले भी ऐसा था, बाद में भी ऐसा है, तो ये जो है वो कैसा है, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन है. ठीक है, तो इसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप. डन. यहाँ पे हम लोग कोई भी गेन लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करते. यहाँ पे मैंने एक समरी बनाया है, कमर्शियल क्या होता है, नॉन कमर्शियल क्या होता है, ये वाला इम्पोर्टेंट है. अगर बिजनेस में वो इकोनॉमिकली कुछ इम्पेक्ट कर रहा है तो ही कमर्शियल है, अदरवाइज नॉन कमर्शियल. Now let's see this question. Pluto Limited owns land and building which are carried in its balance sheet at an aggregate carrying amount of rupees 10 million. So this is the carrying value of land. The fair value of such asset is 15 million. So this is the fair value of the this land and building. It exchanges the land and building for a private jet. देखो यहाँ पे जो है वो अलग asset exchange हो रहे हैं. ओके, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. यहाँ पे कुछ तो चेंज आएगा प्राइवेट जेट लेने के बाद. ओके, विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 20 मिलियन. तो प्राइवेट जेट का फेयर वैल्यू कितना है, 20 मिलियन, एंड पेज एडिशनल 3 मिलियन इन अ कैश, एंड ऑल्सो आई एम गिविंग 3 million in a cash. So now we have to provide, uh, we have to apply the necessary provision of Index 16 and for the above transaction, and we have to pass the journal entry. So इसको कैसे करेंगे देखो. So we will assume that PPE जो हमने acquire किया है, so this is a commercial transaction. तो commercial transaction में first priority we give to a fair value of the asset given up. तो यहाँ पे हमने land and building दिया है, उसका fair value है 15 million. Also we are giving cash of 3 million. So we will going to record PPE means a private jet at 18 million. समझ में आ रहा है. सो इसका जनरल एंट्री कैसे होगा, पीपीई टू पीपीई, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बुक से जा रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को तो ऑब्वियसली कैरिंग अमाउंट से ही कम करेंगे, बिकॉज ये कैरिंग अमाउंट में रिकॉर्ड हुआ है, तो अभी उसको हटाना है बैलेंस शीट से, तो वही अमाउंट से उसको रिवर्स करेंगे. तो वी हैव रिकॉर्डेड पीपीई एट 18 मिलियन. फिर पीपीई लैंड एंड बिल्डिंग का उसको रिड्यूस करेंगे. फिर है कैश जो हमने दिया है 3000 का, और बैलेंसिंग फिगर से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, हमारा गेन मिल जाएगा. ऑल्सो वी कैन रिकॉर्ड प्रॉफिट अलग से भी, कि हमने इतना एक्वायर किया, हमने ये वाला लैंड दिया, फिर हमने कैश भी इतना दिया है, तो हमें इतने का प्रॉफिट मिला. वैसे वैसे तरीके से भी वी कैन गिव अलग से वर्किंग नॉट प्रॉफिट का. ठीक है. Entity X has a warehouse which is closer to factory of entity Y and vice versa. The factories are located in the same vicinity. एंटिटी एक्स, देखो यहाँ पे दोनों अपने वेयर हाउस एक्सचेंज कर रहे हैं और वो सेम लोकेशन पे है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी बिजनेस में चेंज नहीं आ रहा है, बिजनेस के कैश फ्लो पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. Entity X and entity Y agrees to exchange their warehouses. The carrying value of warehouse of entity X is rupees 1 lakh.
and its fair value is 1,25,000. So if in case of non-commercial transaction, we record asset at the carrying value of the asset given up. So यहाँ पे we are giving our warehouse. So warehouse carrying value is 1 lakh. So we will going to record warehouse on a 1 lakh which we are receiving of entity Y. एंड इट ऑल्सो एक्सचेंज ओके द फेयर वैल्यू उस ये एंटिटी वाई का ये सब तो कुछ जरूरत नहीं है इट ऑल्सो रिसीव्स कैश अमाउंटिंग टू ₹5,000 so see from 1 lakh we will going to reduce this 5,000 ka cash because it is reducing our cost. How should entity X account for the exchange for the warehouses? Let's see how we can account this. So see PPE we will going to record at 95,000. हमें न्यू PPE मिल रही है 95,000 की, उसके लिए हमें 5,000 का कैश भी मिला है. एंड देन PPE हम हमारे बुक्स में 1 लाख की है, उसको हम लोग रिवर्स करेंगे. So this is the simple solution. So method of depreciation, straight line method. What we do in straight line method, cost minus residual value divided by useful life. Okay, so this is how we calculate depreciation in straight line method. Then WDV method, where we chart depreciation rate on the opening carrying value. Then there is units production method, where we charge depreciation based on the units produced and estimated units. Here there are important points that depreciation on PP begins when the asset is available for use. Okay, and when we cease to charge depreciation when asset is held for sale or asset is derecognized. These are the journal entry which we pass for recording depreciation. Okay, so let's see the question. This is the module question, illustration 6. An asset which cost rupees 10,000 was estimated to have a useful life of 10 years and residual value of 2,000. So देखो, one very important concept, if there is any change in asset cost or if in asset useful life or its residual value, then that all changes are known as accounting estimate. And whenever in question there is changing in accounting estimate, so in that case we will going to first bring the carrying value of the asset on the date of change. So see here what's happening in the question. Here after 2 years useful life was revised to remaining 4 years. ओके तो 2 साल के बाद जो यूजफुल लाइफ जो है ना 10, वो कितनी हो जाएगी 4. अभी 2 साल गए तो कितनी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए 8, बट अब वो 8 नहीं है, अब वो 4 ही है. ठीक है, तो अभी इसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट वी विल गोइंग टू ब्रिंग द कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट आफ्टर 2 इयर्स. उसके बाद फिर हम लोग ये जो चेंज हुआ है उसका इफेक्ट देंगे और उसके बेसिस पे फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे आगे के इयर्स में. So okay, so let's bring the carrying value till second year. Here it is. So depreciation for the first year, also in the question they have asked us to calculate the depreciation of first, second and third. Okay, see here. So we also have to calculate the depreciation of each year. So yeah, so 10,000 minus residual value divided by useful life, we got 800 per annum depreciation for first year. For second year it will be the same. Now for third year we will going to first calculate the carrying value. Okay, carrying value after 2 years. So we got the carrying value by reducing the depreciation of 2 years. We got the carrying value. We will take carrying value, then we'll reduce residual value again and we'll divide it by 4 years because now remaining useful life is only 4 years. So we got the depreciation for third year also. Limited owns an asset with an original cost of rupees 2 lakh. On the acquisition, management determined that the useful life was 10 years and residual value will be 20,000. The asset is now 8-year-old and during this time there have
be no revision to the assessed residual value. At the end of year 8, management has reviewed the useful life and the residual value and has determined that the useful life can be extended to 12 years. तो देखो यहाँ पे यूजफुल लाइफ 10 years है, बट अभी मैनेजमेंट को एट द एंड ऑफ ईयर 8 उनको ऐसा लग रहा है कि यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू में चेंज आ सकता है और यूजफुल लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 years। तो अभी पहले 10 थी तो और 12 years हो सकती है यूजफुल लाइफ, और ये 8 year एंड के बाद उनको ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, उनका एस्टिमेशन चेंज हो रहा है। As a result, the residual value will reduce to rupees 10,000। तो उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू 10,000 हो जाएगी। सो हम जब ओके चलो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को, बहुत इजी है। पहले तो चेंज हो रहा है 8 years के बाद, तो तब तक का हम लोग कैरिंग वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 2 lakh minus 20,000 divided by 10 years, so we got depreciation of per year. Then we're going to calculate the carrying value at the end of 8 year, which will be cost minus depreciation of 8 years, then we'll get the carrying value. Now new depreciation we will start from 9th year. So how it will be? Carrying value of 8th year minus new residual value divided by 4 remaining useful life. So we will get depreciation from 9th year, which is 11,500. Easy. A Limited purchased some property, plant and equipment on 1st April 2001 and estimated the useful life for the purpose of the financial statement prepared on the basis of INDs। ठीक है, उन्होंने परचेज किया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और उन्होंने फिर अपना यूजफुल लाइफ एस्टिमेट किया है। Following were the original cost and the useful life of the various component of property, plant and equipment assessed on 1st April 2001। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट दिया है उन्होंने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिए हैं एंड यहाँ पे उसकी ओरिजिनल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दी है। A Limited uses straight line method of depreciation on 1st April 2004, means after 3 years. The entity reviewed the following useful life of the property, plant and equipment through an external valuation expert. So on a 1st April entity ने क्या कराया, revalue कराया useful life and then useful life changed to 10 years, 7 years and 5 years respectively. There were no salvage values for the 3 component of the property, plant and equipment। मतलब residual value नहीं है। Compute the impact of revaluation of useful life on the statement of property, plant and equipment for the year ended 31st March 2024। तो simple easy, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग carrying value calculate करेंगे after 3 years and then we will going to calculate the revised depreciation और जो difference उसका रहेगा that will reflect in the P&L। Let's see the solution. Firstly, existing depreciation up till 31st March 2004 will be useful life divide करके will going to calculate the depreciation per annum, फिर carrying value निकालेंगे that will be as on 31st March 2004। so यहाँ पे जो per annum का depreciation है into 3 करके will going to reduce from the original cost and will going to get the carrying value। Now new depreciation from 1st April 2004, that will be calculated with the revised useful life, which is 10, 7 and 5 like this way। Okay, so total depreciation earlier was 25 lakh and now it is 26 lakh। So because of revaluation, our depreciation is increased by 1 lakh। Okay, so we got the solution. An entity acquired an asset 3 years ago at a cost of rupees 5 million. The depreciation method adopted for the asset was 10% reducing balance method. At the end of year 3, the entity estimates the remaining useful life of the asset is 8 years। Okay, third year end के बाद
उन्होंने एस्टिमेट किया अपना यूजफुल लाइफ और वो है 8 years एंड डिटरमाइंस टू अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड. सो पहले एनटीटी रिड्यूसिंग मेथड यूज कर रहे हैं एंड नाउ दे वांट टू अडॉप्ट स्ट्रेट लाइन मेथड आफ्टर 3rd year. ओके, सो इसका डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3rd year तक हम लोग कैरिंग वैल्यू लेके आएंगे और उसके बाद 3rd year का जो भी कैरिंग वैल्यू होगा उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से फिर आगे के ईयर्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. सी, first we will going to calculate the carrying value till year 3rd. How we will going to get that? Year opening balance WDV से हम लोग चार्ज करेंगे depreciation. Will take this closing, फिर वो closing को consider करके वही closing पे हम लोग फिर depreciation चार्ज करेंगे and will get a closing for a second year. So like that, this way we calculate, right? So first we will going to calculate the carrying value up till year 3, and on that carrying value we will going to calculate the depreciation for the remaining years. Remaining useful life कितनी है? 8 years है. ठीक है. So year 4 to 11 का इतना depreciation लगेगा per annum. On 1st April 2001, Sun Limited purchased some land for rupees 10 million, including legal cost of 1 million. So legal cost can be included, so we will directly going to take 10 million as a land cost in order to construct a new factory. Construction work commenced on the 1st May. तो जो भी expenditure रहेगा वो हम लोग 1st May से consider करेंगे. Sun Limited incurred the following cost in relation with its construction: preparation and leveling of the land 3 lakh, we can add this cost. Purchase of material for the construction 6 point, yes, we can add this cost. Employment cost for the construction worker, we will going to add this cost also. Overhead cost incurred directly on the construction of the factory, this is important, so we can add this overhead cost. Will not add this will also not going to be added. ये P&L में record होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. The factory was completed on 30th November 2001. तो factory को बनने में कितना टाइम लगा? From 1st May to 30th November, so it is 7 month. तो 7 month तक का हम लोग यहाँ पे है ना कॉस्ट लेंगे, जैसे 2 लाख इंटू 7 करेंगे बिकॉज ये पर मंथ दिया है तो वैसे. एंड प्रोडक्शन बिगेन ऑन 1st Feb. The overall useful life of the factory building was estimated to be 40 years. तो बिल्डिंग को अगर डेप्रिसिएशन करना है तो हम लोग ये वाली यूजफुल लाइफ यूज करेंगे. However, it is estimated that roof will be to be replaced 20 years after the date of the completion. So यहाँ पे roof part है, यहाँ पे पता नहीं, I think so ये roof है. तो रूफ को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा आफ्टर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन, एंड दैट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट अ करंट प्राइस वुड बी 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. सो देखो यहाँ पे जो रूफ है ना वो 30% है टोटल कॉस्ट का. तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे बिकॉज अभी यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे जहाँ पे कैसा होता है कि एक असेट है और उसमें एक मेजर कॉस्ट वाला असेट है. ठीक है, एक कंपोनेंट है जिसका मेजर कॉस्ट है वो टोटल असेट में, तो वो जो वो वाला असेट है जिसका मेजर कॉस्ट है उसका डेप्रिसिएशन हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं और बाकी असेट का हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट डेप्रिसिएशन, so that we will going to understand with the question. At the end of 40th year period, Sun Limited has a legally enforceable obligation to demolish the factory and restore. So demolition cost यहाँ पे बताया है उन्होंने. The director estimate that the cost of demolition in 40 years time will be 20 million. So 20 million is the cost of demolish. And annual risk adjusted discount is 8%. This is the discount rate. The present value 1. तो यहाँ पे देखो 40 years का हमें PV दिया है, PV फैक्टर दिया है हमें, ठीक है, of 40 year. सो जो 20 मिलियन हमें 40 इयर्स के बाद इनकर करना है उसको ये फैक्टर को यूज करके हम लोग पीवी पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस्ड बाय द लोन ऑफ 17.5 मिलियन टेकन ऑन 1st April. देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसा बोला है कि देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है,
ये असेट है उसको सब्सटेंशियल टाइम लगा है बनने के लिए, तो एज पर इंडियस 23, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोरोइंग कॉस्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। The loan was at the annual rate of 6%, तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 7 महीने का हम लोग उतना इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। Sun Limited received investment income of ₹1 lakh on temporary investment of the proceeds, तो ये जो है ना वो हम लोग कॉस्ट में से रिड्यूस कर सकते हैं, ये वाला इनकम। ठीक है, कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री on the balance sheet date of a Sun Limited as on 31st March to explain the treatment of all amount. Okay, how we will going to solve this? Let's see the solution. Cost हम लोग thousands में लिखने वाले, ठीक है, तो लैंड हम लोग का ऐड कर होगा, लैंड कॉस्ट पूरा, साइट कॉस्ट विल गोइंग टू ऐड, मटेरियल ऐड होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट इंटू 7 करके लिखेंगे, ये हम लोग का ओवरहेड है, ठीक है, which was related to the construction. Then present value of dismantling cost, interest cost we will going to add, we will going to less the income on the investment, so this is the cost, ठीक है, cost of the building. Okay, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू 31st मार्च 2000। सो देखो यहाँ पे जो लैंड है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे बिकॉज लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो ये टोटल कॉस्ट में से लैंड का कॉस्ट हटा के हमारा ये नेट कॉस्ट होगा। सो डेप्रिसिएशन ऑन रूफ पार्ट, अभी ये जो रूफ है वो हम लोग का मेजर कॉस्ट वाला असेट है, ठीक है, तो उसको हम लोग सेपरेटली डेप्रिशिएट करेंगे। सो टोटल कॉस्ट में से 30% रूफ का है, सो रूफ का ऑलरेडी हमें यूजफुल लाइफ भी दिया है क्वेश्चन के अंदर 20 years, ठीक है, सो 20 years के हिसाब से हम लोग रूफ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और 4 मंथ्स के लिए ही होगा बिकॉज हम लोग का कंस्ट्रक्शन ही खत्म हुआ है नवंबर, सो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे रूफ के ऊपर और फिर बाकी के पार्ट्स के ऊपर अलग से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऐसे, ठीक है। सो टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग का इतना होगा एंड फिर वी विल गोइंग टू गेट ए कैरिंग अमाउंट जहाँ पे हम लोग का जितना भी टोटल कॉस्ट है माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे, सो वी विल गेट अ कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March 2002। Flying Airways Limited is a company which manufactures aircraft parts and engines and sells them to large multinational companies like Boeing and Airbus Industries. On 1st April 2001, the company began the construction of new production line in its aircraft parts manufacturing shed. तो कंपनी ने 1 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है न्यू प्रोडक्शन लाइन का, ठीक है। कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन लाइन आर एज फॉलोज, और ये सारे कॉस्ट उन्होंने इनकर किए। कॉस्ट ऑफ द बेसिक मटेरियल लीज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट करके हमें ये प्राइस दिया है, सो यस दिस प्राइस वी कैन इंक्लूड इन द कॉस्ट। रिकवरेबल गुड्स एंड द सर्विस टैक्सेस इनकर्ड नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट। रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है मींस इसका हमें रिफंड मिलेगा, ठीक है, तो ये वाला कॉस्ट हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग थाउजेंड्स में कैलकुलेशन करेंगे, मटेरियल लेंगे 10,000 का, ठीक है, रिकवरेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। Employment cost of the construction staff for 3 months to 30th June 2001 is 1200. Other overheads directly related to the construction is 900. So this is related to the construction, so we can include 900. Payment to external advisors relating to the construction, we can include this. Expected dismantling and restoration cost is 2000. The construction staff was engaged in the production line which took 2 months to make ready for the use and brought into use on 31st May 2001. So here there is a catch that construction staff were engaged only for the 2 months. But here the employment cost which is being given is for the 3 months. So we will going to divide this cost by 3 and we will going to do multiply by a 2. So we'll get 2 month employment cost. So 2 month employment cost will only be included in the cost.
ठीक है। एंड हम लोग का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो रहा है, 31 मई को। The other overheads were incurred in the 2 months period ended on 31st May 2001. They include an abnormal cost of 3 lakh caused by the major electrical fault. तो यहाँ पे जो अदर ओवरहेड्स है ना, वो 2 मंथ्स के लिए ही दिए हैं, बट यहाँ पे एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ 3 lakhs भी इंक्लूड है। ठीक है, तो वो हम लोग फिर यहाँ से रिड्यूस करेंगे। The production line is expected to have a useful economic life of 8 years. तो production line का useful life कितना है, 8 years. So we will use this 8 years for depreciation calculation. At the end of that time, Flying Airways Limited is legally required to dismantle the plant in a specified manner and restore it to the location to acceptable standard. हमें dismantling करके देना है after 8 years. The amount of rupees 2 million mentioned above is the amount that is expected to be incurred at the end of useful life of the production line. Appropriate rate यहाँ पे हमें P factor दिया है 5% के हिसाब से. 4 years after being brought into use, the production line will require a major overhaul to ensure it generates economic benefit for the second half of its useful life. तो देखो यहाँ पे एक major component कॉस्ट है ओवरहोलिंग का विच गोइंग टू बी इनकर आफ्टर 4 years. ठीक है, तो इसका हम लोग अलग से फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द ओवरहोल, जस्ट अ मिनट, एट द करंट प्राइस इज 3 million. तो ये ओवरहोलिंग का cost दिया है which is 3 million. The company computes its depreciation charge on monthly basis. No impairment of the plant had incurred by 31st March. Analyze the accounting implications of cost related to production line to be recognized in the balance sheet and profit and loss for the year ended 31st March 2002. ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सी, मटेरियल हमने ऐड किया, एम्प्लॉय कॉस्ट हमने 2 मंथ्स का ही लिया है. ठीक है, ओवरहेड में से हमने इलेक्ट्रिकल शॉक वाला जो था वो हमने कॉस्ट लेस किया है. यहाँ पे एक्सटर्नल एडवाइजर वी कैन इंक्लूड. पीवी पे हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट लिया है एंड वी गॉट दी टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन लाइन. डेप्रिसिएशन ऑन पीपी मेजर ओवरहॉलिंग पार्ट का हम लोग अलग से डेप्रिसिएशन करेंगे. ये 4 साल के लिए ही ये चलने वाला है. ठीक है, और सी हियर वी हैव टेकन 10 months बिकॉज हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो कब स्टॉप हो रहा है, हम लोग का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो रहा है, 31st मई को. तो अप्रैल एंड मई एक्सक्लूड करेंगे. उसको एक्सक्लूड करने के बाद 10 रिमेनिंग मंथ्स बच रहे हैं, तो हम लोग ने इसलिए यहाँ पे 10 months लिया है. और यहाँ पे टोटल बाकी जो अदर पार्ट है उसका यूजफुल लाइफ 8 years है. ठीक है, so we got the depreciation. So carrying amount as on 31st March 2002 कितना आएगा, cost minus depreciation. ये दोनों depreciation को मिला के we'll going to reduce the depreciation and we'll get a carrying value as on 31st March 2002. अभी देखो यहाँ पे हम लोग को P&L का इम्पैक्ट भी देना है. तो हमने ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, हमारी जो लाइबिलिटी है वो हमने पीवी पे रिकॉर्ड किया है, तो उस पर हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज भी ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इतना अमाउंट का हम लोग इंटरेस्ट भी उसमें ऐड करेंगे. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे पूरे साल का मत ले लेना, हमें 10 months का ही इंटरेस्ट उसमें ऐड करना है. हाँ, तो हम लोग का कैरिंग अमाउंट ऑफ डीकमीशनिंग लाइबिलिटी कितना आएगा, ओपनिंग बैलेंस इतना था, उसमें हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऐड किया, तो हम लोग का 1417 हम लोग का डीकमीशनिंग लाइबिलिटी आ रहा है. बैलेंस शीट में हम लोग दो चीज रिकॉर्ड करेंगे, पीपी एंड हम लोग का नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएगा प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी. पीएनएल में हम लोग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे एंड हम लोग का फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 57. सो पीएनएल में इतना हिट जाएगा. इजी. October 2001, XY Limited
completed the construction of power generating facility. The total construction cost was rupees 2 crore. The facility was capable of being used from 1st October 2001, but XY Limited did not bring the facility into use until 1st January 2002. So we will going to consider 1st October because asset is available for use from 1st October. So we will going to take, we will for depreciation they have given these dates. So we will going to charge depreciation from 1st October. The estimated useful life of the facility at 1st October 2001 was 40 years. So they have given us the useful life. Under the legal regulation in jurisdiction in which XY Limited operates, there are no requirements to restore the land on which power generating facility stands to its original state at the end of the useful life of the facility. However, there is no legal requirement to restore the land, but XY Limited wants to for its reputation because previously also they have chosen to restore the land. Okay, and the director has estimated the total cost for restoring the land after 40 years would be 1 crore, and discounting rate will be 5%, and also they have given the PV factor. Explain and show how the above will be reported in the financial statement of XY Limited for the 31st March. To it's very easy. Okay, so for initial recognition, we have to first calculate what we can include in the cost. The construction cost we can include, and then other cost which has been given in the question is the dismantling cost, and dismantling cost we record at a present value. So we got this both cost. Let's understand this within solution. So they have told us to present answer in thousands. So I have taken the cost, present value of dismantling cost. We got the cost of the PPE. Now on the cost of PPE, we will going to calculate the depreciation for 6 months from October to March. So we got the depreciation. After getting depreciation, we can easily calculate the carrying value by reducing the depreciation, right? So we got the carrying value which we will going to show it on 31st March 2002. Then the finance cost on the liability, decommissioning liability which we have created. So on that also we will going to charge interest of the 6 months only. Okay, from October to March. So what we're going to show in a balance sheet, asset, then provision, decommissioning liability. This is including interest. Then in P&L will show depreciation and fixed cost. Okay. Under Index 16, if a part of an asset is a significant in value, we treat it separately. We calculate depreciation separately for that part. Let's understand this with an example of airplane. Suppose airplane full cost is 1 crore and engine cost is 60 lakhs. So we will going to depreciate engine separately. Okay, we will going to depreciate both separately by taking their own useful life. But if the part has the same useful life as the main asset, suppose engine का भी useful life is 40 years and body का भी useful life is 40 years. So in that case, we will not going to depreciate it separately. Replacement cost. So suppose if there is any asset which we need to replace it by, for example, after 5 years, after 10 years, then that case what we will have to do is we will going to add the cost of the new part, and then we will going to remove the cost of the old part from the books. We will going to understand this with an example. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि if the machine value is 10 lakh, old engine is of rupees 2 lakh and new engine is of 3 lakh. So we will going to add the cost of the new engine, and then we will going to reduce the cost of old one. And on new value we will going to record it on our books. A shipping company is required by law to bring all ships
into dry dock every 5 years for major inspection and overhaul. Overall expenditure might at a first sight seems to be repair to the ship, but it is actually a cost incurred in getting the ship back into seaworthy condition. As such, the cost must be capitalized. Okay. A ship which cost rupees 20 million with 20 years life must have a measure overall every 5 years. So here we will going to apply the concept of component accounting. Okay. So here we will going to depreciate the cost of overhauling separately and other part of the ship separately by taking their own useful life. So here overhauling cost useful life is 5 years and remaining part useful life is 20 years. Okay, the actual overhaul cost incurred at the end of year 5 was 6 million. So here then after 5 year actual cost which was incurred was 6 million. So calculate the revised carrying amount at the end of fifth year and depreciation thereon. So how we will going to do is, फर्स्ट विल गोइंग टू सेपरेट द कॉस्ट मेजर इंस्पेक्शन का 5 मिलियन 5 years के लिए, अदर पार्ट का 20 years के लिए. Depreciation per annum will be 1 million per annum and 0.75 million per annum. Total depreciation including both cost depreciation is 1.75 million. So what will be the carrying amount on a fifth year? तो एक तो ये पूरा हम लोग का ये cost है, and we will going to reduce the depreciation till fifth year. So we will get the carrying amount on a fifth year. Now what will be the revised carrying amount of the ship? What we have learned in the concept that take the cost, take the carrying amount, add new cost, new asset cost, and then reduce the old cost value. So 5 million minus 1 million into 5, तो ये इसका जो cost है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है. ठीक है. सो वी विल जस्ट गोइंग टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ न्यू overhauling which is 6 million. So we will get the carrying amount. Okay. Now we will going to charge the depreciation same 6 million का अलग से, बाकी पार्ट का अलग से. 6 million का 5 years के लिए, बट बाकी years का 15 million के लिए. ठीक है. And then we will going to calculate the depreciation from 6 to 10 year, which is 1.95 million per annum. MS Limited has acquired a heavy machinery at a cost of rupees 1 crore with no breakdown of the component parts. The estimated useful life is 10 years. So this is the useful life of this machinery. At the end of the 6th year, one of the major component, the turbine, requires replacement. So there is a major part in this machinery which is turbine, and it requires replacement after the end of the 6th year. As a further maintenance is uneconomical, the remainder of the machine is perfect and it is expected to last for next 4 years. So remaining part of the machine can also last for the next 4 years, means remaining part of the machinery is for the 10 years, but the turbine can only work till 6th year. The cost of a new turbine is 45 lakh and the discounting rate is assumed to be 5%. Analyze whether the cost of new turbine can be recognized as an asset. Yes, it can be recognized as an asset. And if yes, then apply the accounting treatment relevant to it. So here see, they have not given us the cost of the old part of turbine. They have not given the cost of old turbine. Okay, so in that case, what we will going to do is, we will going to take the cost of the old part. No, first we will going to take the cost of the new turbine, which is 45 lakh, and then we will going to do it PV. We will convert this into the present value by taking the date of the installation of old part. Okay, so we will going to make this PV up till 6th year. 5% का
discounting rate use करके we will going to take the PV factor of 6 year, and we will going to make this amount to a present value, and that will be our cost. After taking present value also, we will have to deduct depreciation. Let's see this with the solution. See, this is the machine cost, which is 1 crore. Okay, first we will going to calculate the carrying amount of the machine on a replacement date. मतलब 6th year तक कितना carrying value होगा, that we will going to calculate. Okay, so ये depreciation 6 year का minus करके we will going to get the carrying value of a 6 year. Carrying amount of a old part on a replacement date. So since old part cost is not given in the question, we will going to calculate the old part cost by do it PV. Okay, जो 45 लाख है न्यू पार्ट का कॉस्ट, उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में लेके आएंगे पीवी फैक्टर को यूज करके. So we got the cost of the old part, and then we will going to reduce the depreciation. So in depreciation we will need to be little careful. Here we cannot take directly 6 year. We have to take the total useful life of the asset, which is 10 years. And among that we will going to take the 6 years depreciation. So we will going to reduce that much depreciation, so we will get the cost of old part, which is 13 lakh 43,160. Now what will be the new carrying value of the machine? First is the 40 lakhs, which is here the carrying amount of other parts, plus this is our original carrying value on a 6th year end. So we will going to take this carrying value, then we will going to add the new component asset का value, which is 45 lakh. जो हमने new turbine लिया है उसका cost we will going to add, and then we will going to reduce the old cost turbine which we have calculated above. So then we will get a new carrying value of the machine. So this is the way we will going to calculate the carrying value when they have not given us the cost of old component part. So in that case we will, again I will going to repeat it, we will going to take the cost of the new part, we will convert it into present value, and then we will going to reduce the depreciation, so we'll get the old part cost. Now let's study the concept of subsequent recognition. Subsequent recognition generally we do on a balance sheet date. Okay, so now there are two models. First is cost model and revaluation model for charging depreciation, and this is being mentioned in the accounting policy of the company, that which accounting policy they are following for charging depreciation, whether they are following cost model or they are following revaluation model. Once the model is decided for the asset, then that model is applied to the full class of the asset. Okay, so if company is following cost model, so on subsequent recognition, how we will going to recognize the subsequent recognition is we will going to take the cost of the asset, will reduce depreciation, and we will reduce impairment loss, and will get a carrying value. Okay, so that net carrying value will directly be recognized in subsequent recognition. But if we are using revaluation model, then there is two methods which is being given in India's. First is accumulated elimination approach, and second method is restatement approach. Now what is there in this method? Okay, so first we will have to derive net carrying value, and to derive at a net carrying value we'll have to reduce depreciation. So on gross carrying value, if we reduce depreciation, we'll get a net carrying value. So in accumulated depreciation approach, we'll first going to reverse full accumulated depreciation. Okay, and then we will
after reversing the depreciation, we'll get a net carrying amount, net carrying value we will get, and we'll compare that net carrying value with a fair value. So if fair value is more than a net carrying value, then we'll get a revaluation gain, and vice versa. And suppose if company is not following this accumulated depreciation approach, then first we will going to reverse depreciation normally. We're going to reduce it from PP, like doing entry of depreciation to PPE, and then we'll get a net carrying value, and then we're going to compare with the fair value, and then directly we will going to make these entries. Okay. Now there is restatement approach. So in restatement approach, we don't bring net carrying amount by reducing whole depreciation. What we do is we proportionately reduce gross carrying amount and accumulated depreciation amount. How we will going to do this? First we will going to calculate the percentage of revaluation. ठीक है कि नेट कैरिंग अमाउंट में कितना चेंज आया है फेयर वैल्यू से. सो फेयर वैल्यू माइनस नेट कैरिंग अमाउंट विल गोइंग टू गेट दी revaluation percentage, and this percentage we will going to apply proportionately to PPE and accumulated depreciation altogether. If it is a gain, then we will do general entry like this, and if it is loss, then we will do like this. It's simple method. Okay, I hope you all understood this. Let's discuss this question. This is very simple question to understand two methods which are there for revaluation. We're going to solve this question by using both the methods. Okay, now let's see. Jupiter Limited has an item of property, plant and equipment with an initial cost of 1 lakh. At the date of revaluation, accumulated depreciation was this much and the fair value of the asset was 65,000. Prepare the necessary journal entries. So how we will going to solve this? First, let's see with the elimination approach. So what we do first is we bring net carrying value, and for that we have to reduce the depreciation. So first we will going to reverse the depreciation. Okay, depreciation question में कितना बोला है? 55,000 हमें बोला है कि accumulated depreciation is 55,000. So we will going to first reverse the accumulated depreciation. Then we'll get net carrying value 1 lakh minus accumulated depreciation. This is net carrying value. We'll compare it with fair value, and here we are getting revaluation gain. Okay. Then we will going to make the entry of revaluation gain PPE to revaluation gain 20,000 20,000. Now how we will going to solve this with the restatement approach? First we will going to calculate the percentage. Okay, so here it is a revaluation gain. So कितना revaluation gain हो रहा है, that we will going to calculate, and then proportionate 44% we will going to adjust it from the PPE and accumulated depreciation, and this impact will going to be happen on ग्रॉस कैरिंग वैल्यू. नेट कैलकुलेट करके उसमें परसेंटेज अप्लाई नहीं करना है. 1 लाख का हम लोग का पीपीई है, अभी गेन हो रहा है, तो इतने परसेंटेज से हम लोग अपना पीपीई बढ़ाएंगे, उतने ही परसेंटेज से हम लोग अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज करेंगे, एंड बैलेंसिंग फिगर फिर हम लोग रिवैल्यूएशन गेन में पोस्ट करेंगे. ठीक है, इजी. Company X performed a revaluation of all its plant and machinery at the beginning of 2018-19. The following information relates to one of the years. So gross carrying amount is 200, accumulated depreciation is 80, net carrying amount is 120, fair value is 150. Total useful life is 10 years, and company is using straight line method for charging depreciation. एंड रिवैल्यूएशन, ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है ना, रिवैल्यूएशन ये 4th ईयर का ही ये डेटा दिया है. कैसे पता चला? बिकॉज एक फेयर वैल्यू दिया है, उसे हम लोग ऐसा मानेंगे कि 4th ईयर एंड का हमें ये डेटा दिया है. हाउ शुड कंपनी अकाउंट फॉर द रिवैल्यूएशन? इट्स वेरी सिंपल. पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन अप्रोच में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम रिवर्स करेंगे नेट कैरिंग वैल्यू लाने के लिए.
फिर उसके बाद जो भी हमारा रिवैल्यूएशन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि 30,000 का रिवैल्यूएशन गेन है, ठीक है। सो उतना करने के बाद हमारा जो पीपी है वो कौन से वैल्यू पे आएगा, 150 1,50,000 पे वो आएगा, ठीक है। तो उस पे फिर हम लोग 6 years डिवाइड करके पर एनम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, and then we will going to charge depreciation to accumulated depreciation for remaining years. Now in second method, in restatement approach, first we will going to calculate the revaluation gain percentage, which is how we will going to calculate this, by taking fair value minus net carrying amount. We're going to calculate the percentage and proportionately we will going to give adjustment to pp, ये gain है, so pp हम लोग का increase होगा, accumulate depreciation increase होगा and balancing figure revaluation gain में hit होगा. Depreciation after revaluation same, because here company is using straight line method, so 150 divided by 6, 25 per annum का depreciation, same entry depreciation to accumulated depreciation. An item of PPE was purchased for rupees 9 lakh on 1st April 2001. It is estimated to have a useful life of 10 years and is depreciated on a straight line basis. On 1st April 2003, so see after 2 years, the asset is revalued to rupees 9,60,000. हम लोग क्या करेंगे कि 2 years का depreciation charge करके हम लोग carrying value लेके आएंगे after 2 years, and then we will going to compare with the fair value. Okay, and then we will come to know okay, whether there is revaluation gain or revaluation loss, and will give impact according to it. Useful life remains unchanged as 10 years, तो useful life 10 years है. Ignore impact, अभी यहाँ पे after 2 years remaining useful life कितना होगा, 8 years, ठीक है. Ignore the impact of deferred taxes. Calculate the depreciation and revaluation surplus for 2003-4 as per Ind AS 16. So first we will going to take the cost as on 1st April 2001. We will reduce the depreciation for 2 years. We will get a carrying value as on 1st April 2003. We will compare with the fair value and we are getting revaluation gain. ठीक है. So this is the fair value and we will going to calculate the depreciation for the remaining useful life, which is coming 1,20,000. Now see, as we have discussed the question that because of revaluation, if we are getting excess depreciation, we can adjust that depreciation with the revaluation surplus. So here we have got gain of 2,40,000. Because of revaluation, we are getting excess depreciation. See, before we were getting 90,000 depreciation per annum, but after revaluation it's coming 1,20,000 per annum. ओके, 30,000 का डिप्रिसिएशन हम लोग का इंक्रीज हो गया है, उतना हम लोग लेस कर सकते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से, ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन 31st March 2004. समझा? इजी. So before starting this question, we will going to revise the concept of revaluation surplus. Okay, so when we are doing revaluation and we have got revaluation gain, then that revaluation gain we will going to transfer it to the revaluation surplus, and if we have got revaluation loss, then we will going to debit it to the P&L account. Okay, this is the case when revaluation is being done for the first time. Now if subsequently we are doing revaluation and if we have got loss, suppose, okay, so we will going to compare what was done previously. So current year I have got loss, but then I have to compare कि previous year में क्या हुआ था. अगर previous year में gain हुआ है, तो जो लॉस मुझे ये करंट ईयर में हुआ है उसको पहले आई विल गोइंग टू एडजस्ट विद द प्रीवियस ईयर का गेन. ओके, और अगर प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ है
तो फिर करंट ईयर का लॉस आई विल डेबिट इट टू द P&L. इट वर्क्स लाइक दिस. अभी करंट ईयर में अगर मुझे गेन हुआ है और प्रीवियस ईयर में भी मुझे गेन हुआ था, तो करंट ईयर में भी वो वाला अमाउंट रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट होगा. बट अगर प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ था और करंट ईयर में मुझे गेन हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसको हम लोग इतना कट करना पड़ेगा. वी विल स्टार्ट दिस अगेन. ओके, विल डू दिस. अब मैं क्या बोलना चाह रही थी, लॉस वाला मैं बोलना चाह रही थी कि अगर वो करंट ईयर में उसको अगर वो करंट ईयर में लॉस हुआ है, तो वी विल सी कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है. तो अगर वो प्रीवियस ईयर में गेन हुआ है, करंट ईयर में लॉस हुआ है, बट प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, गेन हुआ है. करंट ईयर में लॉस, प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में लॉस है और प्रीवियस ईयर में क्या है, गेन है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस को गेन के साथ एडजस्ट करेंगे. ओके, और उसके बाद अगर एक्सेस बचता है तो फिर P&L में ट्रांसफर करेंगे, वैसा बोलना है. ठीक है, विल स्टार्ट दिस अगेन. So before starting this question, I wanted to discuss the concept of revaluation surplus. So suppose when we are doing revaluation and we are getting revaluation gain, so that revaluation gain we will going to record in revaluation surplus. And if we are getting revaluation loss, then we will going to debit it to the P&L. This is the adjustment we do when we are doing it for the first time. If we are doing revaluation and if we are getting gain and loss, then we will going to book like this. Gain है तो revaluation surplus में, loss है तो debit होगा P&L में. अभी हम लोग जब subsequently revaluation कर रहे हैं और तब अगर हमें गेन हुआ, तो क्या करेंगे, हम पहले कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या था. ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर में भी गेन था, तो अगेन करंट ईयर का जो गेन है हम लोग वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड करेंगे. अगर प्रीवियसली लॉस हुआ है, तो जितना हमें ये करंट ईयर में गेन हुआ है उसको पहले एडजस्ट करेंगे लॉस के साथ, और उसके बाद अगर बैलेंस बचता है तो उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड करेंगे. ओके, व्हाट इफ करंट ईयर में लॉस हुआ, मुझे वापस प्रीवियस ईयर में कंपेयर करेंगे. अगर प्रीवियस ईयर में भी लॉस हुआ है, तो करंट ईयर का लॉस डायरेक्टली आई विल गोइंग टू बुक इन दी P&L. बट अगर प्रीवियस ईयर में गेन हुआ है, तो करंट ईयर का जो लॉस है वो पहले वो गेन के साथ एडजस्ट होगा. ठीक है, वो गेन कम होगा, उसके बाद अगर बैलेंस बच रहा है तो फिर हम लोग उसको डेबिट करेंगे P&L में. एडिशनल पॉइंट्स हमने आई थिंक सो पहले भी डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग ने ये समझा था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम लोग P&L में कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते. उसको रिटेन अर्निंग में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली व्हेन असेट इज हेल्ड फॉर सेल और इट इज डी रिकॉग्नाइज्ड. तभी हम लोग का जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसको हम लोग रिटेन अर्निंग में डाल सकते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि हम लोग जब असेट यूज कर रहे हैं तभी हम लोग डाल सकते हैं रिटेन अर्निंग में, जब हम लोग का एक्सेस डेप्रिसिएशन आ रहा है ड्यू टू रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन हमने किया, उसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया, तो वो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आया ड्यू टू रीवैल्यूएशन उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं रिटेन अर्निंग्स में. तो ये कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन. Heaven Limited had purchased a machinery on 1st April 2001 for 30 lakhs, which is reflected in its books at a written down value of rupees 17 lakh 50,000 on 1st April 2006. So this is the opening balance and this is the balance on 1st April 2006. The company has estimated an upward revaluation of 10% on 1st April 2006 to arrive at the fair value of the asset. Now company is doing revaluation and that they are doing on 1st April 2006 means after 5 years. So 5 साल के बाद वो लोग revaluation कर रहे हैं और वो भी upward revaluation कर रहे हैं.
Heaven Limited availed the option given by Indies of transferring some surplus of the asset is used by the enterprise. तो यहाँ पे देखो वो बोले है क्वेश्चन में कि वो लोग ट्रांसफर करते हैं सरप्लस को. On 1st April 2008 वापस revaluation हो रहा है after 2 years. The machinery was revalued downward by 15% and company also re-estimated the machinery's remaining life to be 8 years. Okay? उनका यूजफुल लाइफ भी वापस रिवाइज हो रहा है, चेंज इन एस्टिमेशन भी हो रहा है, तो उसको भी हमें एडजस्ट करके चलना है. On 31st March 2010, the machinery was sold for rupees 9,35,000. The company charges depreciation on a straight line method. Prepare the machinery account in the books of Heaven Limited over its useful life to record the above transaction. So how we will going to do this? See, firstly we'll see the notes जहाँ पे हम यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले देखो हम लोग को है ना क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ दी नहीं है, सिर्फ बोला है कि 2008 में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 8 years. तो हमें टोटल यूजफुल लाइफ पहले तो पता करनी पड़ेगी. वो कैसे करेंगे? सी, पहले तो वी विल गोइंग टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टिल 1st April 2006. तो हम लोग का ओपनिंग इतना था और हम लोग का 1st April 2006 को ये बैलेंस है. 31st मार्च को है राइट, 31st नो ऑन 1st April 2006, 1st April 2001 को 30 लाख है और उसके बाद हम लोग का बैलेंस है 17,50,000 आफ्टर 5 years. तो उसको जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो हम लोग का आ रहा है 12,50,000. अब ये जो 12,50,000 है वो 5 साल का डेप्रिसिएशन है, तो इसलिए हम लोग ने उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो हम लोग को पर एनम का डेप्रिसिएशन मिल गया. अभी हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पता करनी है, तो वो कैसे करेंगे? देखो अभी ये जो 17,50,000 है वो बैलेंस है एज ऑन 1st April 2006. अगर उसको डिवाइड कर देंगे बाय द डेप्रिसिएशन पर एनम तो हमें मिल जाएगा 7 years. तो ऑलरेडी 5 साल हो गया था और इसको अगर 7 years को ऐड करेंगे तो हमें टोटल यूजफुल लाइफ मिल जाएगा 12 years. सिंपल है यार. अगर देखो अगर ये वाला जो है ना यूनिटरी मेथड से आ रहा है, देखो कैसे. अगर 2,50,000 हमें पर एनम का डेप्रिसिएशन पता नहीं होता और हमें 7 years पता है, तो वो 2,50,000 हमारा आता अमाउंट पर एनम का. इट इज लाइक दैट. ओके, ओके. So we have got the total useful life which is 12 years. अभी हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें on 1st April 2001 पूरा 30 लाख का आएगा. ठीक है, हम लोग का मशीनरी. उसके बाद we'll going to charge depreciation and we have got the carrying amount as on 31st March 2002. ओके, बाद में सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सेकेंड ईयर का कैरिंग वैल्यू आ गया. थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिफ्थ ईयर में ट्विस्ट है जहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, फिफ्थ ईयर के बाद सिक्स्थ ईयर में हम लोग का क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रहा है. 17,50,000 का हम लोग का 10% का अपवर्ड रीवैल्यूएशन हो रहा है. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का डेप्रिसिएशन जो है वो ये हो जाएगा. ठीक है, रीवैल्यूएशन के बाद हम लोग का कैसा होगा डेप्रिसिएशन, 7 years में हम लोग डिवाइड करेंगे बिकॉज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 7 years. ओके, तो फिर हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया. फिर 1st April 2007 को हमें ये बैलेंस मिला, उसमें डेप्रिसिएशन किया. अभी सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, वापस रीवैल्यूएशन हो रहा है और यहाँ पे अभी लॉस हो रहा है, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो रहा है. ठीक है, तो ये वाला अमाउंट है, उसमें से अभी हम लोग का क्या हो रहा है, देखो ये सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन हो रहा है और हमारा ये इतना लॉस है. तो अभी हम लोग क्या कर, हम लोग का प्रीवियस ईयर में गेन था, तो जितना प्रीवियस ईयर में गेन था उतना पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे हमारे लॉस को.
और जो बचा हुआ लॉस है फिर उसको ही हम लोग पीएनएल में डेबिट करेंगे। ओके, सो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये हम लोग ने रिवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्टमेंट दिया, बाय पीएनएल करके हम लोग ने इतना पीएनएल को डेबिट किया, फिर वापस हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो डेप्रिसिएशन जो है ये रहा, अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 years है, उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर 1 अप्रैल 2009 को भी क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन, और रिमेनिंग जो अमाउंट हम लोग ने फिर सेल भी किया है, देखो ठीक है, ये जितना भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग पीएनएल में डाल देंगे। डेप्रिसिएशन हम लोग ने चार्ज किया फॉर द नेक्स्ट ईयर, और हम लोग सेल कर रहे हैं इतने का मशीनरी, तो रिमेनिंग हम लोग का पीएनएल में हिट होगा। ओके, अभी देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या आएगा, ओपनिंग हम लोग का इतना था, ये हम लोग ने एक्सेस डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया है। देखो पहले हम लोग का 2,50,000 था पर एनम, बट रिवैल्यूएशन किया तो 2,75,000 आए, तो हम लोग एक्सेस जो रहता है वो हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्ट करेंगे, तो हमारा बैलेंस ये होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का। बिकॉज ये हम लोग ने कैलकुलेट क्यों किया है पता है, इसके लिए, ये पहले बताना चाहिए था मुझे, ठीक है, बट ये हम ऐसे पहले वर्किंग करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और फिर ये अमाउंट से हम लोग का रिवैल्यूएशन लॉस एडजस्ट होगा। डन? Okay. X Limited has a machine which got damaged due to fire as on 31st January 2001. Carrying amount of the machine was rupees 1 lakh on that date. Okay, ये carrying value था मशीनरी का जब वो डैमेज हो गया फायर से तब। X Limited sold the damaged asset as a scrap for rupees 10,000. फिर हमने इतने का सेल किया असेट को। हम लोग के बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू था 1 लाख का, बट हमने सेल किया 10,000 का, तो 90,000 का तो हमें लॉस हो गया। But X Limited has insured the same asset against damage. हम लोग ने इंश्योरेंस लिया हुआ था। As on 31st March 2001, the compensation proceedings were still in process, but the insurance company has confirmed the claim. The compensation of rupees 50,000 is receivable from insurance company. So as on 31st March क्या था कि compensation जो है ना वो अभी तक हमें मिला नहीं है, वो proceedings में है, ठीक है, बट हम लोग को compensation 50,000 का है, वो receivable है। इसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, देखो ये कंपेंसेशन रिसीवेबल है तो इसका हम लोग अलग से एंट्री करेंगे, बाकी ये पीपी को हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो हम लोग का ऐसा जनरल एंट्री होगा, और कंपेंसेशन के लिए कंपेंसेशन रिसीवेबल टू कंपेंसेशन अकाउंट करके कंपेंसेशन इनकम करके हम लोग का जनरल एंट्री पास होगा, और पीएनएल में हम लोग इतना रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम, ठीक है। Now we will going to discuss the concept when there is change in estimation of decommissioning liability. So what the concept is, it depends upon the model which we are using for charging depreciation. If we are using cost model and if decommissioning liability is increased, so then we will going to increase our asset. So we will make an entry like PB account to provision for decommissioning liability, because हमारा यहाँ पे liability increase हो रहा है, okay. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पहले हम लोग का डिकमिशनिंग लायबिलिटी था 5,000 एंड एस्टिमेशन चेंज की वजह से अभी वो है 7,000। सो अभी हम लोग 2,000 इंक्रीज करेंगे, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, पीपी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी। Now if decommissioning liability is decreasing, like suppose earlier it was 7,000 and now it is 5,000, so यो 2,000 डिक्रीज हो रही है, तो उसको फिर हम लोग रिवर्स करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें कैसे एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी, जो हमने लायबिलिटी क्रिएट किया था प्रोविजन का,
डिकमीशनिंग लायबिलिटी का उसको कम करेंगे और उतने ही अमाउंट से हम लोग अपना पीपीई भी कम करेंगे, ठीक है। So this is the adjustment that we will going to do when we are using cost model. If we are using revaluation model, then if there is increase in liability increase हो रहा है तो ये हमारा लॉस है। तो अभी इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, अगर हम लोग का बैलेंस पड़ा है रीवैल्यूएशन सरप्लस में, पॉजिटिव बैलेंस अगर है, तो हम लोग का जो लॉस है पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करेंगे, इन बैलेंसिंग फिगर फिर हम लोग डेबिट करेंगे पीएनएल में। And if our liability is decreasing, then there is a gain. So in that case, first we will going to see कि पहले हमने डेबिट तो नहीं किया था पीएनएल को, लॉस वगैरह अगर बुक किया हो रीवैल्यूएशन करने के टाइम पे, तो अगर हमने लॉस वगैरह पहले बुक किया है तो गेन के टाइम पे हम लोग पहले वो लॉस को रिवर्स करेंगे एंड फिर बैलेंसिंग फिगर जो होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस में, बिकॉज यहाँ पे हमारा गेन हो रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स सी दी क्वेश्चन। An entity has a nuclear power plant and a related decommissioning liability. The nuclear power plant started operating on 1st April 2001. The plant has a useful life of 40 years. So this is the total useful life of the plant, which is 40 years. Its initial cost was rupees 1,20,000, which included an amount for decommissioning cost of rupees 10,000. So 1,20,000 is also including cost of decommissioning liability, which represented 70,400 in an estimated cash flows payable in a 40 years. Discounting rate adjusted is a 5%. So this is the PV, present value दिया है ये 1,20,000 का, ठीक है, which is being payable for a 40 years. Entity's financial year end on 31st March. After 10 years खत्म होने के बाद the net present value of decommissioning liability has decreased by 8,000. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें पहले तो कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो होगी आफ्टर 10 years, ओके, और उसमें से फिर decommissioning liability की पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10 years तक, फिर उसमें से हम लोग 8,000 तक का हम लोग डिक्रीज कर देंगे लाइबिलिटी। Examine how the entity will account for the above changes in decommissioning liability in 11th year if it adopts cost model. तो cost model में हम लोग सिर्फ PPE में adjustment करते हैं and हमारे provision of decommissioning liability में adjustment होती है when it is a cost model. Okay, let's see the solution कैसे हम इसको solve करेंगे। So on 1st April 2001, we will going to make journal entry like this: PP account to bank to provision for decommissioning liability. इतना amount का हम अपना provision create करेंगे। Now will going to calculate the interest expense. हमने जो यहाँ पे liability book की है उस पे हमें अभी interest charge करना पड़ेगा every year. Okay, so that we are doing in next step. So on 31st March 2002, this is the opening balance. We will going to charge interest of a 5%, and this will be our closing balance on year end. Same interest calculation we will do for 10 years, and at the end of 10 years we will going to see what is the closing value of our liability. It is 16,300. So after 10 years we are decreasing our decommissioning liability and it is being decreased by 8,000. Okay, so after calculating carrying value, if we decrease our liability by 8,000, this is the carrying value we are getting, and on this carrying value we will going to calculate the interest charge for the next year. So this is the finance cost in the next year, which is 415. So now what will be the carrying amount after 31st March, मतलब after 10 years? Okay, what will be the carrying value on 31st March 2011? सो वी विल गोइंग टू टेक द कैरिंग वैल्यू में से जो हमारी इनिशियल कैरिंग वैल्यू थी वो, उसमें से वी विल गोइंग टू रिड्यूस द डेप्रिसिएशन ऑफ 10 years व्हिच इज 30,000, और उसमें से हमारा लायबिलिटी हम लोग डिक्रीज करेंगे। सो दिस इज द कैरिंग वैल्यू एज ऑन 31st March 2011, एंड डेप्रिसिएशन फिर इस पे हम लोग चार्ज करेंगे। मेन यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है ना, ये पीपीई का तो बहुत इजी है कि हम लोग पीपीई के इसमें डायरेक्टली हम लोग कर भी सकते हैं। देखो
कि 10 इयर्स का डेप्रिसिएशन लेस करो, डीकमिशनिंग लाइबिलिटी जिस अमाउंट से रिड्यूस हुआ है वो लेस कर दो, विल directly going to get the depreciation after 10 years. Okay, but main problem over here is the finance cost. हम लोग का जो decommissioning liability है वो कौन सी वैल्यू पे आएगा, ठीक है. दिस इज द मेन ट्विस्ट ओवर हियर. यहाँ पे थोड़ा है, बाकी तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है. ये जो एडजस्टमेंट है ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, यही थोड़ी कॉम्प्लेक्स है वर्किंग, ये समझ में आना चाहिए. और ये जो 31 मार्च 11 तक का हमें कैलकुलेट करना है ना, वो भी स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है. Limited purchased an item of PPE costing rupees 100 million which has useful life of 10 years. The entity has a contractual decommissioning and site restoration obligation estimated at rupees 5 million. So this is the decommissioning liability obligation of 5 million, and this to be incurred by the entity at the end of 10th year. Current market based discounting rate is 8%. Company follows SLM method of depreciation. H Limited follows the cost model for accounting of PPE. Okay. Determine the carrying value of an item of PPE and decommissioning liability at the each year end. So देखो, carrying value भी हमें find out करना है, and also decommissioning liability भी we have to calculate for every year. There is no change in expected decommissioning expenses, expected timing of incurring the decommissioning expense or the discounting rate. पहले तो हमें ये एस्टिमेट करके कैलकुलेशन करना है कि जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और बी पॉइंट में at the end of year 4 the entity expect, और यहाँ पे फिर चेंज हो रहा है, the expected estimated cash flow on the account of decommissioning liability. So at the end of year 4 अभी जो decommissioning liability है वो अभी 8 million है in place of 5 million. 5 million जो past में थी अभी उसकी जगह पे 8 million है. Determine in case B how H Limited needs to account for the changes in the decommissioning liability. अभी बी में हमें डिटरमाइन करना है कि कितना उनको चेंज करना है decommissioning liability में. Let's see. We will going to begin with the workings which I have made. So first we will going to do the PV of decommissioning liability. तो 5 million जो है ना वो हमें 10 साल बाद इनकर करना है, तो उसको PV पे लाके हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग का जो पीपी कॉस्ट है वो कितना होगा, 100 मिलियन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ decommissioning liability. So this is the total value of PPE. फिर we will going to take the total value of PPE और उसमें हम लोग SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 10 इयर्स का, ठीक है. So this is the depreciation per annum. We are getting this depreciation by using SLM method. Now provision for decommissioning liability कितना आएगा, देखो 2.32 का हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, decommissioning liability का. उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 8% का एवरी ईयर. सो इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद ये वाली क्लोजिंग बैलेंस हमें मिलेगी 10 इयर्स तक, ठीक है. और देखो 10 ईयर के बाद वो 5 मिलियन हो भी रही है. डन. फिर है अभी क्वेश्चन बी हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब जो हमारा decommissioning लाइबिलिटी है वो हमारा चेंज हो रहा है, वो कितना हो रहा है 8 मिलियन. सो 8 मिलियन जो है वो आफ्टर 4 ईयर हो रहा है, तो भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची, 6 ईयर. तो हमने यहाँ पे जो पीवी फैक्टर है वो 6 ईयर का लिया है, बिकॉज ये 8 मिलियन है वो अभी हमें 6 साल बाद इनकर करना है, ठीक है. सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 मिलियन. उसमें से हम लोग लेस कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ decommissioning liability आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है. देखो हम लोग ने 4 ईयर में कितनी कैलकुलेट की है decommissioning liability, ये रही. सो 4th ईयर पे हमारे बैलेंस शीट के हिसाब से
जो ओरिजिनल एस्टिमेशन था हम लोग का, उसके हिसाब से हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 3.16 मिलियन, और अभी हमारा जो एस्टिमेशन रिवाइज हुआ है उसकी वजह से हम लोग का आ रहा है 5.04 मिलियन। सो उसकी वजह से हम लोग का इतना इंक्रीज है लाइबिलिटी में, हमें इतना लाइबिलिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। सो नाउ हियर एंटिटी इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल के केस में हम लोग पीपीई को इफेक्ट देते हैं। सो वी विल गोइंग टू मेक जर्नल एंट्री पीपीई टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, और इतना अमाउंट से हम लोग इंक्रीज करेंगे पीपीई को एंड लाइबिलिटी को भी। अभी पीपी अमाउंट आफ्टर 4 years कितना होगा, देखो हमने यहाँ पे जो है कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट की है ऑफ पीपी फॉर एवरी ईयर। सो ऑन 4th year पीपी क्लोजिंग बैलेंस इज 61.39, तो ये कैरिंग वैल्यू है, उस पे हम लोग ऐड कर देंगे इंक्रीज लाइबिलिटी 1.88 मिलियन का। सो अभी डेप्रिसिएशन फ्रॉम 5th year कितना होगा, ये हम लोग का जो कैरिंग वैल्यू है, रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू ऑन अ 4th year एंड, तो अभी 5th year एंड से अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची, 6 साल बचे, ठीक है, 4 साल हो गए, 4 साल के एंड में हम लोग खड़े होके ये सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 6 years, ओके, 6 year है, और ये अभी डेप्रिसिएशन पर एनम का है। तो 5 to 10 years लिया, ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस, और ये हमारा ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो देखो 5 to 10 years का भी हमने रिवाइज्ड कैलकुलेशन किया, एंड देन प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का भी हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हम लोग अभी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ऑन दी रिवाइज्ड वैल्यू। अभी हम लोग का रिवाइज्ड वैल्यू हमने एस्टिमेट किया ना पीवी करके, ठीक है, इस पे अभी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। An entity has a nuclear power plant and a related decommissioning liability. एनटीटी के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उसके रिलेटेड डीकमिशनिंग लायबिलिटी भी है। The nuclear power plant started operating on 1st April 2001, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट हम लोग का 1st April से स्टार्ट हो गया। The plant has a useful life of 40 years. Its initial cost was 1,20,000, ये उसकी इनिशियल कॉस्ट है और 40 years उसकी यूजफुल लाइफ है। This included an amount for decommissioning cost of rupees 10,000. तो 1,20,000 में 10,000 का decommissioning cost भी included है, which represented rupees 70,400 in estimated cash flows payable in 40 years, discounted at risk adjusted rate of 5%. सो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू दिया है 1,20,000 का। The entity's financial year ends on 31st March. Assume that market-based discounted cash flow valuation of rupees 1,15,000 is obtained at 31st March 2004. So see, on 31st March 2004, they have done the valuation. Assume that market based. So this is the fair value which they have given आफ्टर 3 years, तो 21, 22, 22, 23, 23, 24। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना कैरिंग वैल्यू लेके आएंगे आफ्टर 3 years, उसके बाद वी विल गोइंग टू कंपेयर विद दी फेयर वैल्यू। जो डिफरेंस होगा वो तो हमारा गेन या तो फिर लॉस होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट। सो ये जो वैल्यूएशन है ना, उसमें डीकमिशनिंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो जब हम लोग फेयर वैल्यू कंपेयर करेंगे उसमें हम लोग डीकमिशनिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे, which represents no change to the original estimate after unwinding of 3 years discount. बट इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है जो हमने इंटरेस्ट ऐड किया था उसके अंदर 3 साल तक, ठीक है, वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पहले इतना हम लोग देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें। फर्स्टली हम लोग कैरिंग वैल्यू लेके आएंगे। इनिशियल कॉस्ट है 1,20,000 और उसमें अगर हम लोग 3 years का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमें कैरिंग वैल्यू मिल जाएगी एज ऑन 31st March 2004। आफ्टर 3 years ये हमारी कैरिंग वैल्यू होगी। फिर हम उसको किससे कंपेयर करेंगे,
हम लोग की फेयर वैल्यू जो हम लोग को 31 मार्च 2004 को दी है, जो कि है 1,15,000, और उसमें उन्होंने डीकमीशनिंग कॉस्ट ऐड नहीं किया था. So we will going to include the decommissioning cost of 11,600. ठीक है. So see, this is the fair value and this is the carrying value. So our fair value is more than the carrying value. So this is our revaluation gain. ठीक है. तो हम लोग को 31 मार्च 2004 को revaluation gain हो रहा है 15,600 का. Now let's see further. अभी on 31st March 2005 means after 1 year, 31st March 2004 के बाद next year में भी क्या हो रहा है? The entity estimates that as a result of technological advances, the present value of decommissioning liability has decreased by 500. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना decommissioning cost में कुछ change नहीं हुआ था. यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बोला था कि थर्ड ईयर का जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी है वो फेयर वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, बस इतना ही बोला है. बट 31 मार्च 2005 को क्या हो रहा है, यहाँ पे डीकमीशनिंग लायबिलिटी का एस्टिमेशन चेंज हो रहा है और वो डिक्रीज हो रहा है. तो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर हम लोग का डीकमीशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारे लिए गेन है. ठीक है. तो ये जो गेन है ना वो हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड करेंगे, या तो पहले देखेंगे कि पीएनएल में अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो उसके अगेंस्ट पहले एडजस्ट करते हैं और रिमेनिंग जो बैलेंस होता है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस में चार्ज करते हैं. तो हम देखते हैं. द एंटिटी डिसाइडेड दैट a full valuation of the asset is needed at 31st March 2005 in order to ensure that carrying amount does not differ materially from fair value. The asset is now valued at rupees 1,07,000, which is the net of allowance for the reduced decommissioning obligation. So यहाँ पे भी net of allowance दिया है, यहाँ पे भी decommissioning obligation include नहीं है, तो इसमें भी add करेंगे हम लोग. और यहाँ पे देखो वापस से रिवैल्यूएशन हो रहा है. ओके, सो हम लोग अभी सेकंड पार्ट देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ यहाँ तक हो गया हमारा. डन. न्यू अमाउंट ऑफ पीपी ऑन 31 मार्च 2000. अभी देखो हम लोग ने यहाँ पे रिवैल्यूएशन किया है, तो अभी हमारा जो वैल्यू होगा पीपी का वो ये होगा 1,26,000. सो अभी इस पे अगर अभी हमारा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर 40 - 3 करेंगे तो 37 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हम लोग का बच रहा है. ठीक है. तो उससे हम लोग 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. तो ये हमारा कैरिंग वैल्यू आ गया आफ्टर एज ऑन 31 मार्च 2005. तो 31 मार्च 2005 को हमारा ये कैरिंग वैल्यू है. फेयर वैल्यू ऑफ पीपी ऑन 31 मार्च 2005, तो वो कैसे आएगा. देखो ये हमें फेयर वैल्यू दिया था और ये हमने डाला है जो चेंज. ओके, इसके पहले हम लोग को वर्किंग देखना पड़ेगा डीकमीशनिंग लायबिलिटी का. सो देखो ऑन फर्स्ट ईयर एंड हम लोग का ओपनिंग बैलेंस इतना था, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करके ये हमारा क्लोजिंग आया. वैसे ही हम लोग ने थर्ड ईयर तक का कैलकुलेट किया था और ये 11,600 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. ठीक है. अभी देखो फिफ्थ ईयर में क्या हो रहा है, फिफ्थ ईयर एंड में क्या हो रहा है. ये ओपनिंग था उसमें हम लोग ने इंटरेस्ट चार्ज किया और हम लोग का इतना क्लोजिंग बैलेंस था एज ऑन 31 मार्च 2005. अभी इसमें हम लोग का लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है 12,200 से, वो डिक्रीज हो रहा है. तो करेंटली दिस इज आर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2005. अभी देखो हमारा डिक्रीज हुआ है लाइबिलिटी, तो अभी इसको हम किस में डालेंगे. देखो हम लोग का फर्स्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम हमने जब रिवैल्यूएशन किया था तब हम लोग का रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था, हम लोग का गेन आया था यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे भी हम लोग का गेन है, तो ये वाले अमाउंट को भी हम लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे. तो हम इसका एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 5,000 ये एंट्री करेंगे. और उसके बाद फेयर वैल्यू में जो हम लोग का डीकमीशनिंग कॉस्ट है एज ऑन 31 मार्च 2005 उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फेयर वैल्यू है. ठीक है. अभी यहाँ पे हम लोग का देखो कैरिंग वैल्यू इतना है और फेयर वैल्यू इतना है, तो ये अभी हमारा रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है. अभी न्यू अमाउंट ऑफ पीपी क्या आएगा, ये न्यू रीवैल्यूड अमाउंट आएगा 31 मार्च 2005 को. अभी आगे के इयर्स में इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे.
अभी रीवैल्यूएशन सरप्लस का कितना बैलेंस होगा? देखो, एक तो हमें जब इनिशियली रीवैल्यूएशन किया था तब हमें इतना गेन आया था। उसके बाद हम लोग का लायबिलिटी डिक्रीज हो गया था 5000 से, जब हमने रीवैल्यूएशन किया। ये हमारा गेन है, हम लोग ने ऑलरेडी एंट्री भी किया है। उसके बाद 31 मार्च 2005 को जब वापस रीवैल्यूएशन किया तब हम लोग का लॉस आ गया था। तो वो लॉस को हम लोग इसमें कम करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है? तो हम लोग का बैलेंस रीवैल्यूएशन सरप्लस का इतना आया। अभी रिटेन अर्निंग्स का मतलब है कि पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा। पहले तो डेप्रिसिएशन, पहले के 3 साल का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। 3 साल का 9000 एंड फिर फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ गया? फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 3420। तो डेप्रिसिएशन बुक कर लिया। और फाइनेंस कॉस्ट 5 इयर्स का यहाँ पे है 2200। सो उसको भी हम लोग पीएनएल में चार्ज करेंगे। तो ये टोटल अमाउंट होगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स में। डन।